Good morning, everyone. Welcome to our next video of the series of CBSE Class 12 for English. So, today we are doing the first chapter of the book, that is Flamingo. The first chapter is called as The Last Lesson, which has been written by Alphonse Daudet. Right? So, uh, little bit about the background of the chapter. This chapter was written about the Franco-Persian War, which is stated here, the background. Right? At that time, the French were defeated by the hands of the Persians. Persia at that time was, a combination of three countries as we know them today as Germany, uh, Austria, and Poland. Right. So two of the French districts of Alsace and Lorraine, they were, taken by the Persians at that time, and they imposed. The first thing that they did was they imposed their own language, which was German language, upon the French who were there living in Alsace and Lorraine. Right. So this is basically called as linguistic chauvinism, which we are going to learn a lot about in the chapter. Uh, One of the greatest examples of linguistic chauvinism is our own country. When the British came here and they told us, उन्होंने हमें बताया था कि our language is much more superior than yours. Hindi is an inferior language to English, and so on. और ये बात उन्होंने खाली हमें नहीं बताई थी. They did this with almost 70% of the entire, uh, entire world where uh, they triumphant, or they ruled, right? So see, very similar to that here also, when the Persians took over these two French districts, what did they do? They imposed upon their own language, and they told everyone there that uh, from the very next day, uh, the teachings of French will be stopped. A new German teacher is going to come, and the German language, will be spoken in the districts of Alsace and Lorraine, right? So here we have two main characters. One is a student. His name is Franz, and he's a boy of 13 or 14 years old. He studies in a French school, uh, which was run by a teacher whose name is Mr. M. Hamill. M basically stands for Monsieur, or you can say Mr. So M. Hamill has been a legendary teacher in that particular school. He has been teaching there for the past 40 years. पिछले 40 साल से वो वहां पर पढ़ा रहे हैं. So you can imagine उनकी what kind of an impact he must have had on the students there, right? Plus the legacy that he must have created there, वो भी एक बहुत बड़ा part है. Now, these two characters are going to be affected a lot because of this new order which has come from Berlin. Berlin से ये जो order आया है कि from the next day जो French teaching है वो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी in both the districts of Alsace and Lorraine, और एक नया German teacher वहां पर आने वाला है, and German will be the official language from the next day, right? And how this news hit everybody there, how it changed the attitude of Franz towards his country, towards his language, towards his studies, everything. And how M. Hamill as a teacher changed, how people reacted to this news, what happened in the school, and so on. Everything we are going to study here, right? So, to complete this chapter, I'm going to divide this into two different videos, because a single video will be just too much, too long. So that's why I'm going to divide this into two particular videos, right? So let us begin. Let us start, and let's see what happens here, right? We'll do line-wise explanation of the chapter.
children, whenever you don't understand anything, whenever you'll find it difficult to understand, और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसको। दिस इज जस्ट फॉर योर revision and understanding of the chapter better, right? You must be reading the chapter in your schools as well. But again, a very healthy revision do help, and we all, that is including me, अगर मैं किसी भी एक चीज को एक से ज्यादा बार पढ़ता हूं तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प करेगा। सो दैट इज द मेन मोटिवेशन ओवर हियर। सो लेट अस बिगिन, और स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर, द लास्ट लेसन, राइट? So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. So see, children, here it is starting with I. So whenever something is starting with I, that means it has been narrated in the first person. So make sure there are basically two kinds of narrations: the first person and the third person. So whenever there is the narrator using I for himself, that is the first person narration. और जब भी हम किसी के बारे में कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, दैट इज अ थर्ड पर्सन नरेशन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नैरेटिव किस तरीके से की गई है। यहाँ पर फ्रांस जो है वो हमारा नरेटर है, और वही हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो लीड कैरेक्टर, राइट, द मेन हीरो किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी का, किसी मूवी का, राइट। तो फ्रांस हमें ये पूरी की पूरी स्टोरी अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है। ओके, सो ही सेज आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो हमें इससे ही पता चल जाता है कि वो स्कूल के लिए लेट था उस दिन। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ना, डर, ड्रेड मतलब डर। तो वो उसको डर था कि उसको, क्योंकि वो लेट था स्कूल के लिए, तो उसको डर था कि उसको डांट पड़ने वाली है। Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. तो उनको एक होमवर्क मिला था ऑलरेडी अपने टीचर की तरफ से, दैट ही इज गोइंग टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। एंड ये उसने प्रिपेयर शायद नहीं किया था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन फियर ऑफ इट। ठीक है, इसीलिए वो डर रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। ऑब्वियसली एज आई सेड, उसने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. Yes, this is the first thought. आप लोगों के मन में भी बहुत बार होता है, जिस दिन होमवर्क नहीं किया उस दिन छुट्टी कर लो, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से फ्रांस वाज थिंकिंग अबाउट द सेम। उसने होमवर्क नहीं किया है एंड ही इज थिंकिंग अबाउट टेकिंग द लीव दैट डे, और बाहर उस दिन को वो अपना स्पेंड करेगा। I was so sorry. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. Drilling means practicing, right? So it was very bright, it was very warm, it was beautiful day outside, and the birds were chirping in the morning. सुबह सुबह रोज ही बहुत खूबसूरत सा माहौल एक होता है। वो ज्यादा खूबसूरत लगता है जब हमें स्कूल जाना पड़ता है। सो वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल एक्चुअली। नन ऑफ यू बेसिकली वांट्स टू गो टू स्कूल, तो इसलिए सुबह तो बहुत खूबसूरत लगती है, और बाहर की सराउंडिंग्स और भी खूबसूरत लगती हैं। ऐसा लगता है कि काश आज छुट्टी होती और हमें स्कूल ना जाना पड़ता और हम कोई होमवर्क ना करते, एंड इट शुड हैव बीन अ फन डे फॉर अस। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही फ्रांस भी देख रहा है, वहां पर पर्शियन सोल्जर्स हैं, दे आर ट्रेनिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग, राइट? सो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट I had the strength to resist and hurried off to school. So basically, he resisted his temptation. To resist the temptation means उन चीजों को इग्नोर करके जो कि उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, he decided to go to school, right? And he is hurrying off to school because वो already late है, fine. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Now there is a big bulletin board. Now what is a bulletin board? Bulletin board is basically एक यू कैन से एक तरीके का बोर्ड जिस पर न्यूज फ्लैश होती है। ओके,
हमारे यहाँ तो सिटी में शायद राइट नाउ भी नहीं होगा. दिल्ली में you'll find that in big metros you'll find these kind of big boards where you'll find the news and the clippings and the advertisements going on. So at that time, almost 125 years back, uh, in these states of France, there was this bulletin board. इंडिया में तो भूल जाओ, आज भी आपको हाफ ऑफ द कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा. तो देर वॉज दिस बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल, एंड देर वॉज क्राउड, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उसके आसपास. ओके, यस, अ डिजिटल बोर्ड you can say. For the last 2 years, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों में जितनी न्यूज बुलेटिन बोर्ड ने दी है, वो सारी की सारी बहुत बैड न्यूज रही है उसके लिए. राइट, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. एंड ऑब्वियसली, अगर कोई चीज कांस्टेंट सोर्स हो बैड न्यूज का, तो हम लोग ज्यादा उसको इग्नोर करना पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दैट और सीइंग व्हाट इज देयर. बिकॉज द क्राउड वाज देयर, तो ऑब्वियसली ही थॉट दैट कि कुछ ना कुछ तो न्यूज दोबारा से वहां पर फ्लैश हो रही है. ओके. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? So the boy who was already in dread of scolding, he was already in a hurry to reach school. Uh, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था वहां पर, एंड ही वांटेड टू रश टू स्कूल एज सून एज पॉसिबल. वो हमें ये भी बता रहा है कि पिछले 2 साल में उसने काफी सारा बैड न्यूज उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू देखा है. सो दैट्स वाई वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ लोहार, वॉचर, वॉचमैन बेसिकली, who was there with his apprentice pupil, student, reading the bulletin, called after me, don't go so fast, bub, you'll get to your school in plenty of time. So basically, ये लोग वहां पर खड़े हैं, एंड they were knowing what the news was. So उन्होंने देखा that France was hurrying off to his school, और उन्होंने उसको रोक दिया. उन्होंने कहा कि आपको इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्कूल में कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से जाओ. राइट. France could not understand what they meant. Right. So I thought he was making fun of me, and reached M. Hammel's little garden all out of breath. Now, why was he out of breath? Because वो भाग भाग के गया था ना स्कूल. So that is why he was out of breath, right? Usually, when school began, there was a great bustle. Bustle means बहुत चहल पहल. Okay? तो यूजुअली जब हमारा स्कूल स्टार्ट होता है इन द वेरी मॉर्निंग, बहुत चहल पहल होती है स्कूल में, है ना, बहुत आवाज होती है. एवरीबडी इज in a hurry to reach the classroom, the teachers, the students, right? So everyone, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison. Lessons repeated in unison means unison basically means together. Okay, and we repeat the lessons loudly, out loud together. Hmm. Very loud, with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping onto the table, right? The ruler, scale, or you can say any particular thing. So they keep rapping like that. Okay. So this is the expression. But now it was also still. लेकिन आज के दिन पे कुछ डिफरेंट था, कुछ ऐसी आवाज नहीं थी. राइट. ये जो यूजुअल हैपनिंग्स है रोजाना स्कूल की, ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके. सो इट वाज ऑल स्टिल, ऑल क्वाइट. देयर वाज नो नॉइस, नथिंग वाज देयर. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Now, what does this mean? Counted on the commotion. Commotion means noise, right? Commotion basically means a lot of noise. So every day in the normal days, what he basically does is, बहुत शोर शराबा जब होता है तो उसका फायदा उठाकर वो चुपचाप अपने अपने डेस्क तक पहुंच जाता है, राइट, या अपने अपने सीट तक पहुंच जाता है. लेकिन आज तो कोई आवाज ही नहीं है, तो आज शायद ऐसा नहीं हो पाएगा. आज शायद वो पकड़ा जाएगा, वो चालाकी से छुपकर वहां पर नहीं पहुंच सकता. ओके. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग
had to be as quiet as a Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. So basically, he reached his classroom by tiptoeing uh, till his classroom, and then he saw everybody was sitting in on their seats. His teacher, he was walking up and down the class. Now, walking up and down the classes, पूरी class में घूमना, okay? And he had his terrible ruler. Now, why is the ruler called terrible? क्योंकि वो डरावना होता है बच्चों के लिए ना, राइट? तो इसीलिए उसको टेरेबल बोला है उसने। तो वो उन्होंने अपने बाजू में ऐसे लगाया हुआ है, एंड ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन द क्लासरूम, ओके? I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो जब भी हमें किसी को ये नहीं दिखाना होता कि हम घबरा रहे हैं, हम हल्की सी स्माइल अपने फेस पर रखते हैं। और सिमिलरली फ्रांस डिड द सेम। ही केप्ट अ लिटिल स्माइल ऑन हिज फेस, सो ही वाज ट्राइंग टू ब्लश अ लिटिल, बट फ्रॉम इनसाइड ही वाज क्वाइट फ्राइटेंड कि भाई मार पड़ सकती है सर से, ओके? बट नथिंग हैपेंड। जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. So the teacher called him in, told him to sit down because they were about to start the class. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. So वो जो डर उसको लग रहा था अभी वो उससे निकला ही है, and suddenly he saw his teacher, and his teacher was looking different today. His teacher was wearing his green coat, his frilled shirt, right, his black silk cap, all embroidered, right? और ये सारी की सारी चीजें वो ऐसे यूजुअल डेज पर बिल्कुल नहीं पहनते। वो ये सब चीजें कब पहनते हैं? वो इंस्पेक्शन डेज पर या प्राइज डेज पर ये सारी चीजें पहनते हैं। So the whole school seemed so strange and solemn. भाई पूरे स्कूल में एकदम ऐसे शांति लग रही थी। इट वाज ऑल सॉल्व, और बहुत ही स्ट्रेंज सा फीलिंग आ रहा था। पूरा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा था, ऐसा लग रहा था इट वाज अ संडे मॉर्निंग। देयर वाज नो नॉइज, किसी की आवाज नहीं, एब्सोल्युटली डेड साइलेंस एवरीवेयर। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, राइट? एंड ही वाज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ अबाउट ऑल दिस, right? But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Now, what was strange was not the way the school was. It was strange, लेकिन वो सबसे ज्यादा strange नहीं था। The way the teacher was dressed, वो भी सबसे ज्यादा strange नहीं था। सबसे ज्यादा strange क्या था? that there were some village people also sitting in the classroom. आप लोग किसी दिन अपनी क्लास में जाओ और वहां पर बूढ़े अंकल जी बैठे हों, आंटी जी बैठी हों, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, राइट? Similar to that, France was quite surprised to see all the village people sitting at the back of the classroom. Okay. Now, who were these people? The village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat. There was this old man who was, you can say, a farmer who was sitting there. Yeah, he was wearing a three-cornered hat, right? The former mayor, the former postmaster, and several other besides. Now, these were the people who were sitting there. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So he had brought a big book with him, right? Must be a book that he must have read when M. Hamel taught him in the past. So he has brought the book and he has opened it like that on his knees, and he was ready to take his last class. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, right? He he went there
and in the same grave and gentle tone which he had used with me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." So imagine, अगर हमें कोई ये बोले कि भाई अ, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को किसी ने पोजेस कर लिया है, एक नया रूलर आ गया है, एक नई कंट्री आ गई है, और वो ये चाहते हैं कि हम उनकी लैंग्वेज सीखें अगले दिन से और अपनी लैंग्वेज ना सीखें। इमेजिन करके देखो, क्या शॉकिंग मोमेंट होगा वो हमारे लिए। सिमिलरली, क्वाइट सिमिलरली, दिस वाज अ शॉक फॉर एवरीबॉडी हु हर्ड व्हाट एम हैमिल सेड। ज्यादातर लोगों को ये बात ऑलरेडी पता थी, एक्सेप्ट फ्रांस। उसको ये बात अभी पता चल रही है दैट ये उनका लास्ट लेसन है। एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी राइट नाउ, दैट जितने भी स्कूल्स हैं एल्सास एंड लॉरेन में, वहां पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और एक नया जर्मन टीचर अगले दिन से वहां पर आ जाएगा, और आज उनकी लास्ट फ्रेंच क्लास है। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means shock, right? उसके लिए ये बहुत बड़ा शॉक था, वो हिल गया सुन के। Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. So now he remembers कि वो जो टाउन हॉल पर, बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज थी, वो what was it? This was it, right? My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding onto the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Now, uh, cranky means basically strict with a particular attitude, right? So Franz was thinking, अच्छा आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही वाज इन अ मोनोलॉग एट दैट टाइम। क्या बात कर रहा है, ही इज टेलिंग हिमसेल्फ। उसको हार्डली कुछ आता है यार फ्रेंच में। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है फ्रेंच में, राइट? एंड he was he was so sorry, he was so sorry at that time for not learning his lessons, right? वो सारा टाइम ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर भागना चाहता था। वो चिड़िया के, बर्ड के एग्स को देखने के लिए ही यूज्ड टू स्लाइड ऑन टू द सहार्स, राइट? जो भी बुक्स थी वो उसको बड़ा बर्डन लगा करती थी, न्यूसेंस लगा करती थी। बट टुडे he is finding all the books as his old friends. He does not want to part with them. वो उनसे अलग नहीं होना चाहता है बिल्कुल, राइट? तो उसको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट, राइट? हम्म। और वो अपने टीचर से भी अलग नहीं होना चाहता। ही डज नॉट वांट टू पार्ट विद हिज टीचर आल्सो। क्लियर? Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country. That was there no more. So basically, now he understands why everyone was there, why all those people who were sitting at the back of the class were there.
ठीक है, वो सारे के सारे वहां पर क्या कर रहे थे, क्यों वो लोग वहां पर आए थे, है ना? दे वर देयर टू पे द ट्रिब्यूट टू देयर फ्रेंच टीचर, राइट? While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So basically, suddenly he was thinking of all this और उसका नाम बुला लिया टीचर ने, राइट? उसका टर्न था टू रिसाइट द पार्टिसिपल्स, जो उसको कल होमवर्क मिला था, एंड एज वी नो दैट होमवर्क तो उसने किया ही नहीं, सो हाउ वुड ही डू दैट? तो इसीलिए ही स्टूड, ही ट्राइड टू स्पीक, बट ही फंबल्ड ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड पर ही उसने गलती कर दिया, एंड ही कुड नॉट स्पीक एनी फर्दर, राइट? आई हर्ड मिस्टर एम हैमिल से टू मी, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow." And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, "How is it? You pretend to be a Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with." So basically, Mr. M. Hamill told France कि आज वो उसको डांटेंगे नहीं, राइट? उसको खुद से बहुत बुरा लगना चाहिए कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये खाली उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हम सब लोग अपनी लर्निंग को नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं कि हम कल करेंगे, राइट? और ऐसा हर एक जो कि एल्सास का नेटिव है, वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, और उन्होंने कभी भी इस चीज को ज्यादा माइंड ही नहीं किया कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी भी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, जो जर्मन उनकी कंट्री में आए हैं, अगर वो उन लोगों से कुछ पूछ ले तो वो कहेंगे कि भाई कितने शर्म की बात है, आप लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, आपको तो फ्रेंच पढ़नी और लिखनी भी नहीं आती, है ना? तो आप लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते क्यों? तो वो कह रहे हैं कि खाली तुम्हें नहीं, हम सबको रिग्रेट करना चाहिए इस चीज के लिए, राइट? वी आर ऑल गिल्टी फॉर दिस, नॉट ओनली यू बट मी, योर पेरेंट्स, एवरीबडी एल्स, हूसएवर इट इज, राइट? जितने भी नेटिव्स हैं हम लोग, हम सब लोगों की गलती है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. So, the first one that M. Hamill himself he blamed, सबसे पहले ब्लेम उन्होंने उनके पेरेंट्स को किया बच्चों के, कि पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं लर्निंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को। वो अपने बच्चों को थोड़े से पैसे कमाने के लिए फार्म पर या मिल पे काम करने के लिए भेज देते हैं, राइट? एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? तो पहली चीज उन्होंने बताई कि वो कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज देते थे, ओके? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे? तो वो कह रहे हैं कि जब भी उन्हें कभी फिशिंग जाना होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो बिल्कुल छुट्टी कर देते थे बच्चों की। ओके, कोई बात नहीं, आज आप लोगों की छुट्टी है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं, वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन? So we'll keep this particular video till here. We'll continue from here in the next video. So thank you so much all. God bless you. If there'll be any doubts, do write in the comments. Share this video to all of your friends as much as possible, especially of your standard, your class, so that they'll be able to, or this video will be able to help them in revising or preparing the chapter much better. Thank you so much all, and God bless you all.